we want to quickly also just take a look of how these apartments are looking like. What Nabila has also sent us, take a look closely. You know, these huge towers, at least 40 floors, and they are going to be demolished, and they're surrounded around them. There's the ATS Green Village. There is, apart from these Supertech towers, there is also the Emerald Project. So there are definitely thousands of residents and their homes that we're talking about once this explosion, that according to the edifice, they're saying is going to be controlled. So, of course, remember, the neighborhood does have concerns. What are their concerns? We'll take a look one by one about what exactly is being planned with them. Because remember, at this point, we're talking about thousands of residents and what they probably are in fear of. Let's begin now, because we're talking about nearby residents. We're also talking about within the vicinity of that area. And of course, the first and expected fear is the damage to their property as well, which means the neighborhood fears a collapse. The residents, that means, are going to be evacuated a day prior over the weekend. There have been advisories given that they need to pack their bags and go away for the weekend, because there's also, apart from the danger to their home, danger to people, residents who are living, because even though it's controlled, nobody's really sure what could be the impact eventually in that 9 seconds. Now, the demolition and its impact in the green area, if you look closely at that visual as well, apart from the apartments, there's a massive green area, forest area. What could be the impact of the debris falling on that? The dust hazard, that's going to be one big concern. We're talking about 40,000 ton of debris and rubble that could get collected after that 9 seconds of biggest controlled explosion. It'll be a snoot-like dust, so the fear is, apart from location debris, it could also be sticking to the windows and to the apartments of the adjacent neighborhood residents. Now, of course, because of this, what happens to the management of the debris? Who's going to collect it? Noida Authority will be responsible. But the residents, specifically with respiratory issues, are concerned. Even if they go away for the weekend, when they return, there's likely going to be dust in the air. And because of the sort of material that's used in construction, it's going to be air as well. And residents fear that is going to be a respiratory irritation or concerns they may feel. So these are some of the concerns that the residents of Noida neighborhood have told India Today. My colleague Abhishek Anand has been speaking to residents, getting us the ground status. This outside the Emerald Court, his ground report is about a society, neighbors the Supertech Twin Towers. They are happy that it's going to be brought down, but they're also slightly, understandably concerned. Listen in. सुपरटेक ट्विन टावर्स अब से कुछ ही दिनों में गिरने वाले हैं। ये दोनों ट्विन टावर्स जो हैं वो इतने ज्यादा करीब हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के कि इनको गिराने को लेकर के जो रेजिडेंट्स हैं उनको काफी संशय है। आप देख सकते हैं ये सुपरटेक का एमरल्ड कोर्ट है। एमरल्ड कोर्ट से मात्र 9 मीटर की दूरी पर ये ट्विन टावर्स हैं। आप इनकी हाइट देख सकते हैं। ये ट्विन टावर्स की हाइट करीब 100 मीटर ऊंचे हैं। 3900 किलो विस्फोटक लगा करके इनको गिराया जाएगा और ये इंप्लोजन होगा, जिससे कि ये अंदर की तरफ ही गिरेंगे, ना इस तरफ गिरेंगे ना उस तरफ। इसके साथ ही जो दूसरी सोसाइटी है वो एटीएस विलेज है। वहां के जो फ्लैट्स हैं उससे इस ट्विन टावर की दूरी करीब 15 मीटर होगी। तो इसको डेंजरसली क्लोज जिसको कहा जाएगा, उस स्थिति में ये टावर्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है ताकि जो विस्फोट हो उसके जो डेब्री है, जो उसमें से स्प्लिंटर्स निकलेंगे, वो बाहर ना निकल करके फ्लैट्स की खिड़कियां ना तोड़े। इसके लिए आप देख रहे हैं न सिर्फ ट्विन टावर को ही ढका गया है, बल्कि साथ में एमरल्ड कोर्ट के जो फ्लैट्स उसकी तरफ हैं उनके ऊपर भी ये कपड़े से, शीट से ढक करके कोशिश की गई है। विस्फोट की जहां तक हम बात करें तो ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक विस्फोट होगा और पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। ये कंट्रोल्ड ऐसा विस्फोट होगा कि एक लड़ी वाली जो चटाई वाली जो पटाखे होते हैं वैसा होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार विस्फोट होते चले जाएंगे और बिल्डिंग अपने आप नीचे की तरफ ध्वस्त होती चली जाएगी। ये स्थिति है फिलहाल यहाँ पर। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे अभी हमने बात की तो उनका संशय अभी भी बरकरार है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जब जमींदोज होगी तो आसपास की जो बिल्डिंग है जहां लोग रह रहे हैं, क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा? क्या प्लान है सर? कैसे आप लोगों ने इससे निपटेंगे? सर निपटना क्या, बस एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। आरडब्ल्यू का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। और जो पुरानी वीडियोस देखी हैं उसमें धुआं कितना होता है, कितने उसका एक्सप्लोजिव्स का यूज, जैसे 4 टन ऑफ एक्सप्लोजिव दे आर गोइंग टू यूज, तो एक तो उससे धड़कन भी काफी होएगी
और उससे बिल्डिंग को भी इशू हो सकता है।